Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, as you know we are discussing the composition of blood, and in this we already discussed about the plasma, RBCs and WBCs. Today we will discuss about the one more type of blood corpuscles that are platelets or thrombocytes. So let's discuss about these platelets. Platelets or thrombocytes. Generally, when we talk about these, we say that both of these are the same. Platelets and thrombocytes दोनों जो है सेम होते हैं. Platelets को ही thrombocyte बोलते हैं. But there is a minor difference between both of these two. We will discuss about these differences also. First of all, let's try to understand that platelets are found in mammals, whereas the thrombocytes are found in all vertebrates except mammals. So platelets are these blood cells which are found into the mammals. तो ये mammals में मिलने वाली blood cells हैं, and these platelets are formed from the giant cells. एक बहुत बड़े साइज की सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि आरबीसी हमारी रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती हैं. उन्हीं रेड बोन मैरो में प्रेजेंट मेगा कैरियोसाइट्स के साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन से ही प्लेटलेट्स फॉर्म होती है. एक्चुअल में क्या है, जो सेल्स हैं मेगा कैरियोसाइट्स, उनका जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, एंड आफ्टर दैट दीज platelets get formed. So we can say that these platelets, they are found into the mammals and they are produced from megakaryocytes. ये megakaryocytes से फॉर्म होने वाली सेल्स हैं, and these megakaryocytes are present into the red bone marrow. ये red bone marrow में मिलती है, and they are formed just from the cytoplasmic fragmentation. So cytoplasmic part है, nucleus part इसमें involved नहीं है इन cells का. That's why the platelets are also without nucleus. So we can say that they are produced from the megakaryocytes, and it's a cytoplasmic fragmentation. It's a cytoplasmic fragmentation. megakaryocyte का ये सिर्फ साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन से ही फॉर्म हो रहा है. सो ये हुई इसकी फॉर्मेशन की बात. अब as we can say that it's formed from the cytoplasmic fragment, so it do not have nucleus. They are without nucleus. Platelets do not have nucleus. Like RBCs at the maturity, they don't have nucleus. Similarly, the platelets also are without nucleus. ये भी nucleus के बिना ही हैं. Whereas the WBCs, the all type of WBCs and young RBCs, they have nucleus. So they are without nucleus. Enucleated cell है ये. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी शेप की, द शेप इज द ओवल शेप की होती है प्लेटलेट्स. बट व्हेन वी सॉ दीज प्लेटलेट्स इनटू द माइक्रोस्कोप, व्हेन वी सॉ अ dense structure in the center of these cells, center में हमें जो dense structure दिखाई देती है, then we can resemble it with the nucleus, but actually it's not a nucleus. ये nucleus नहीं होता, ये cytoplasmic granules ही है या फिर cytoplasmic part ही है जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है. अदरवाइज दे आर विदाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन दीज प्लेटलेट्स. सो दिस इज अबाउट ओवल शेप्स हो गया इसका शेप की बात हो गई है. साइज की अगर हम बात करें, दे आर स्मॉल इन साइज इनका स्मॉल होता है. स्मॉल इन द सेंस वी कैन से दे रेंजेस फ्रॉम 2 to 3 माइक्रोन. Size ranges from 2 to 3 micron. Another number की हम बात करें, the platelets, they has the number of platelets that we can call it the platelet count. Number of platelets are also known as platelets count. इसे हम platelets count भी बोलेंगे. तो जो platelet counts होता है उसकी जो range है, that range is from 1.2 to 3.5 into 10 to the power 5 cubic per cubic millimeter. Is per cubic millimeter. So this is the number of platelets, or the platelet count ranges from 1.5 to 3.5 per cubic 10 to the power 5 per cubic millimeter. ये होता है platelet counts. इतने नंबर में platelets blood के अंदर present रहती है. But during some situation, the number of these platelets, it can be decreased or it can be increased. So this decrease or increase of the platelets, if the number of platelets get increased, अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है प्लेटलेट्स का, increase number of platelets is known as thrombocytosis. It's known as thrombocytosis. इसे तो हमने बोल दिया thrombocytosis. Similarly,
if the number of platelets get decreased और डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज जो प्लेटलेट्स काउंट अगर ब्लड में मिल रहा है, दैट कंडीशन इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. इट्स नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. लाइक WBCs के केसेस में भी हमने देखा था, वहां पे हमने ल्यूकोपिनिया नाम दिया था. सिमिलरली द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और द thrombocytosis, these are the terms related with the number increase or decrease in the number of platelets. तो ये इनकी बात हो गई. अगर लाइफ स्पैन की हम बात करें, the lifespan of these platelets is very less. They are also live for a very small time. It's just a 1 week time that they spend. So lifespan is from 7 to 10 days. 7 to 10 days का लाइफ स्पैन होता है. नाउ वी नो द फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स. अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, द प्लेटलेट्स हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रिलेटेड विद द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड. व्हेन वी गेट एनी इंजरी एंड द ब्लड कम्स आउट, जब भी चोट लगने पे ब्लड बाहर आ रहा है, तब ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, क्लोटिंग करके ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ दीज प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन जो है, दैट इज रिलेटेड विद द clotting of the blood. So functions की अगर हम बात करें, they are involved in the clotting of blood. They are related with the blood clotting, and for this process, for this clotting process, they release some factors. When during the injury time, some platelets also get injured. Platelets भी injured हो जाती हैं, damaged हो जाती हैं. These damaged or injured platelets, they release some specific clotting factors. ये कुछ factors release करते हैं, and these factors are responsible for the clotting process of the blood. Here we can say that injured or damaged platelets, they release the clotting factors. क्लोटिंग फैक्टर्स और क्लोटिंग प्रोटीन्स जो हैं ये रिलीज करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोटिंग प्रोटीन दैट इज रिलीज बाय दीज injured platelets is thromboplastin. So they release the thromboplastin. इसे हम यहां लिखते हैं, that is the thromboplastin. It's also known as platelet derived factors that is released during the response of injured platelets. जैसे ही चोट लग रही है, platelets injured हो रही है, then they secrete these type of factors, and these factors further on initiate the process of clotting, blood clotting. That complete process of blood clotting we will discuss in our next some videos. So keep watching. हम जरूर करेंगे ये वाला टॉपिक भी, जहाँ पे हम blood clotting की पूरी प्रोसेस डिटेल में स्टडी करेंगे. So this is about the function of the platelets. We have studied that how they are formed. They are formed from the cytoplasmic fragmentations of the megakaryocytes that present into the red bone marrow. Red bone marrow में मिलने वाली megakaryocytes से form हो रहे हैं. They do not have any nucleus. Oval in shape. Size is 2 to 3 micron. Range is 1.5 to 3.10⁵ per cubic millimeter. And the lifespan is 7 to 10 days. ये जनरल बातें हमने यहाँ पे की है. नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन टू द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. जैसे कि हमने शुरू में कहा कि इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो होते हैं जहां हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, हमें देखने को मिलता है. जनरली दे डू नॉट हैव एनी डिफरेंसेस. दोनों का ही फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. दोनों में ही फंक्शन क्लोटिंग का होता है. बट एक जो डिफरेंस यहाँ पे देखने में मिल रहा है वो ये है, प्लेटलेट्स दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, बट the thrombocytes, these are the cells which are found in another vertebrates except mammals. Mammals के अलावा जो vertebrates हैं like amphibians, reptiles, etc. In these vertebrates, the thrombocytes are found, and these thrombocytes are the nucleated cells. They have nucleus. So nucleus is present into the thrombocytes. Thrombocytes में nucleus होता है, and due to the presence of this nucleus, they have spindle shaped structure. इनकी जो shape होती है वो भी इस तरीके से स्पिंडल शेप हो जाएगी, बिकॉज द बल्ज्ड पार्ट बीच में प्रेजेंट रहेगा, जिसके जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. Here the nucleus is present. So this kind of spindle shaped shape is found into the thrombocytes because of the presence of nucleus, and as a function both of these platelets and thrombocytes, they help in the clotting, blood clotting. So that's all about the blood composition of the blood. हमने plasma भी कर लिया, and all formed element we have studied. In the next videos we will discuss about the blood vessels. So keep watching, keep studying, and keep learning.